लेट्स कंटिन्यू। तो कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? हाँ, 129, राइट। तो ए हमारा हो गया था कि हार्मोनियम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू -1। तो सब हो गया था। मैं एक बार वापस देखता हूँ मैंने क्या किया था। सो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने किया था कि x इक्वल टू जेड कोसाइन थीटा एंड y इक्वल टू जेड साइन थीटा, जहाँ पे कोसाइन थीटा साइन थीटा ये, और ऑब्वियसली जेड अपन पॉजिटिव ले रहे, और यहाँ पे थीटा 0 to π/2 है। सो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू, लेट्स सी, 5 कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस 4 कोसाइन स्क्वायर एंड देन प्लस 4 कोसाइन साइन। इसको मैं अलग तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, सो 2 कोसाइन स्क्वायर इज जस्ट 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा, दैट मीन्स इट्स 2 प्लस 2 कोसाइन ऑफ 2 थीटा, और 2, या 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। सो जेड स्क्वायर इंटू क्या 3 प्लस 3 प्लस, नहीं, 2 स्क्वायर रूट 2 रखना पड़ेगा। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा प्लस π/4, राइट। It's equal to 1. So z is what? Right, 1 upon square root of 3 plus. Right. So it's cool and all. Let's look at this. In fact, so 2 theta plus π/4, हाँ। तो ये चीज अगर मैं ट्राई करूँ मतलब देखने का, तो ये इस टाइप से रहेगा। π/4 से स्टार्ट होके पाई प्लस π/4 तक जाने वाला है। सो साइन की वैल्यू यहाँ पे पहले इंक्रीज होगी यहाँ तक, राइट, इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे जब साइन मतलब थीटा पाई प्लस π/4 हो जाएगा, तब अपने को मिनिमम साइन की वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स मैक्सिमम जेड की वैल्यू। अपने को ढूंढना है कि जेड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का है। तो ऑफकोर्स जेड डिक्रीजिंग रहेगा इतने पोर्शन में और इंक्रीजिंग रहेगा इतने पोर्शन में। और अच्छी बात यह है कि ये कोसाइन थीटा से भी रिलेटेड है, राइट। सो इट्स इंक्रीजिंग इन दिस पोर्शन, और इस पूरे पोर्शन में जो कोसाइन थीटा है इट इज या क्या था मैं, सो या 2 थीटा प्लस π/4, जब वो π/2 होगा तब तुम्हारा जो रेट है वो 0 हो जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट कोसाइन थीटा क्या है, राइट। तो अपने को 2 थीटा प्लस π/4 दैट शुड बी लेस देन π/2। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस एस थीटा इंक्रीजेस, जेड भी इंक्रीज होगा। एंड एस थीटा इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स तुम्हारा एक्स डिक्रीज होने वाला है। थीटा इंक्रीजेस इंप्लाइज जेड डिक्रीज होगा, बिकॉज वो 1 में, और वो इट ऑल्सो इंप्लाइज कि एक्स डिक्रीजेस, राइट। दैट मीन्स कि बेसिकली एक्स इंक्रीज हो रहा है और जेड डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो थिंक अबाउट इट। ये तो 2 थीटा प्लस π/4 का हो गया। थीटा का क्या होगा? सो 2 थीटा प्लस π/4 लेस देन π/2, दैट मीन्स दैट थीटा इज लेस देन, सो π/8 आई थिंक। सो it goes from 0 to π/8, of course. So 0 to π/8, हाँ। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, जेड डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, राइट। इसका मतलब है कि एक्स इंक्रीज होने पे जेड, वेट व्हाट, हाँ, एक्स इंक्रीज होने पे जेड भी इंक्रीज हो रहा है इस रीजन में, राइट। तो जेड इज इंक्रीजिंग इन एक्स फॉर एक्स लेस देन जो भी कोसाइन ऑफ, सॉरी, फॉर एक्स बिगर देन जो भी कोसाइन ऑफ π/8 होता है, राइट। सो या इट शुड बी बिगर देन दैट, क्योंकि अगर उससे कम रहा इन दैट केस वो अपन इस रीजन में जा रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट एक्स इंक्रीज करने से जेड डिक्रीज हो रहा है, तो वो अपोजिट हो जाएगा। सो या वी शुड just have cosine of π/8 and that will be done, right? So cosine of π/8 कैसे ढूंढते हैं? Cosine of π/4 is 1 upon square root 2, that's equal to 2c square minus 1,
cosine pi by 8 of course. So 2c square equal to 1 plus 1 upon square root 2 यानी कि square root 2 plus 1 upon square root 2. Now you see क्या था एक्चुअल में. So हाँ ये cosine of pi by 8 ही है. So z is increasing for x bigger than this thing. So A and D I think. Next. Differential equation of a curve passing through 0 comma negative 1 is x square minus y dx plus y square minus x dx equal to, okay. So once again kind of symmetric दिख रहा है अपने को. So x square dx plus y square dy equal to what? Equal to y dx plus x dy. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ d of, well actually डायरेक्टली नहीं, we'll get 1/3 over here. So 1/3 और फिर 3x square हो जाएगा and that's d of x cube plus y cube. और ये चीज है just dxy. तो ये तो काफी इजी था. x cube plus y cube equal to 3xy plus some kind of constant. We don't know what that constant is, right? And this okay, this curve passes through 0 comma negative 1. So जब x 0 है, in that case it's just y cube equal to c, or y is negative 1, then c should be negative 1 as well. Yes, so that means x cube plus y cube plus 1 equal to 3xyz. ऐसी possibility है कि x plus y plus z is equal to 0. In that case this will happen, or otherwise तुम्हें ये तीनों के तीनों equal लगने वाले, which I don't think is very correct. Okay, whatever. Coordinates of the point on the curve with, okay, what? तो वेट अ सेकेंड, ये जो चीज है अपने को पता है कि फैक्टराइजेबल है, और इसका एक फैक्टर जो रहता है दैट ओनली बिकम्स 0 व्हेन x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1. तो एक तो पॉइंट रहेगा, और दूसरा जो केस है वो ये है कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ये एक लाइन और एक पॉइंट, ऐसे दो चीजें दे रहा है, राइट. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद x कोऑर्डिनेट 1. एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट भी 1 हो सकता है, क्योंकि 1,1 एक पॉइंट था, राइट, जो इसका दूसरा फैक्टर था, राइट, वो देता है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1. और जो अलग, यानी जो पहला फैक्टर है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट. तो तब अगर मैं x कोऑर्डिनेट 1 पुट करूं, देन यू जस्ट हैव y इक्वल टू नेगेटिव 2. सो नेगेटिव 2 वर्क्स एंड 1 वर्क्स. सो 130 का b एंड d. हाँ, तो मेरे को प्रूफ चाहिए कि वो कैसे एक्चुअली में काम करता है. अगर मैं नहीं नो सीरियसली, यू कैन जस्ट से कि ओके, एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ये बहुत ही क्लियर कट है, क्योंकि ये सिर्फ AMGM इनइक्वालिटी हो गई. बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज एज वेल ये काम करता है, बिलीव मी यार. मैंने फैक्टराइज किया हुआ है इसको पहले, और बहुत अच्छा फैक्टराइजेशन नहीं रहता है वो. एनीवे, 131. Let A equal to cot inverse 7 and B equal to tan inverse 1 upon 3. If the following holds good, cot inverse 7 and B equal to tan inverse of 3. Sorry, inverse of 1 upon 3. Huh? So the following holds good. So cosine 2A equal to 24 upon 24. So क्या basically cot A equal to 7 and tan B equal to 1 upon 3. इतना ही बोलना है तुम्हें, राइट. और वहां से तुम ये सब निकाल सकते हो, ये सब ये 2a और 4b और इस सब में है, नॉट अ बिग डील. सो बेसिकली tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 एंड tan b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. तो पहले ढूंढते हैं कोसाइन ऑफ 2a. फॉर कोसाइन ऑफ 2a जस्ट 1 माइनस 1 अपॉन 49 upon 1 plus 1 upon 49, which is 48 upon 50, I think, which would be 24 upon 25. तो ये वैल्यू तो सही है, ए करेक्ट है. ओके, सीकेंट ऑफ 2b. सो कोसाइन ऑफ 2b क्या रहेगा? इट्स जस्ट टू बी 1 minus 1 upon 9. हाँ ठीक है, तो 9 minus 1 8 upon 9 plus 1 10, यानी कि 4 upon 5, और उसका रेसिप्रोकल, राइट, तो 5 upon 4. सो b is also very correct. ओके, कोसाइन ऑफ 2a upon sin of 4b.
या वेल कोसाइन 2 अपन निकाल चुके हैं, साइन ऑफ 4 भी इतना हार्ड नहीं हो सकता। साइन कैसा रहेगा, 2 इंटू ये चीज, सो 2 इंटू 3 आ जाएगा ऊपर क्योंकि 2t, सो 2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 वगैरह होने वाला है। सो या अपॉन 9 प्लस 1 यानी कि 10 एंड दैट्स जस्ट 3/5। हाँ, हे नाइस। So it's a 3/5. I mean, of course, the first quadrant के angles and okay, okay. So wait, what you want sine of 4b? Seriously? ठीक है, तो साइन ये है, कोसाइन वैल्यू ये है, so 2 times of this times that, uh yeah, which is 24/25 once again. So sine 4b is also 25, sorry, 24/25, but cosine of 2a that was also 24/25, so ये तो 1 है, very correct। cot of क्या देते हैं, cot of 2b, so tan of 2b निकाल लो, which will just be 2 times this thing, like 2/3 upon 1 minus 1 minus, not plus this time, so 1/9. So this is going to be 6/8, I think, which is 3/4 और उसका reciprocal. So no, this is wrong, d is wrong, right? This doesn't make sense। हमने tan 2b निकाला, वो 3/4 है, तो cot 2b should be 4/3, right? So no, next 132। Okay, if in is equal to from negative pi to pi sine, okay, integration sine nx upon ठीक है, we'll think about it। oh wait, अच्छा ये तो एक इवन फंक्शन होता है, क्योंकि अगर तुम इसमें नेगेटिव डालोगे तो राइट, तो वो इवन फंक्शन है, आई गेट इट। n equal to 0 1 2 so on, then i 2 equal to y, I 1 equal to y। चलो देखते हैं, पहले तो ये इवन फंक्शन is, we can decide this thing as in equal to 2 integration of, wait no, it's not even directly, yeah, यहाँ पे negative x आएगा and that will change everything because right, so in is equal to integration from, it's going from negative pi to pi, yeah, can't you just like break this, तो 0 to pi में break करूँगा, plus integration from negative pi to pi में break करूँगा, negative pi to 0 में, एंड देन फिर मैं x यहाँ पे नेगेटिव t पुट कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव पाई टू 0 जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा एंड दैट्स व्हाई ये 0 to pi में जाएगा, राइट? सो नो बिग डील, इट्स वेरी डुएबल। सो 0 to pi ऑफ सो पहले ये नॉर्मल और फिर बाद में इसमें नेगेटिव x डाल के, एंड वो ये साइन ऑफ nx अपॉन साइन x तो सेम रहेगा, साइन nx अपॉन साइन x, और जो बचा हुआ पार्ट है इट्स जस्ट 1/1 प्लस e पावर x, और फिर जो e पावर नेगेटिव x है वो ऊपर जाके e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x and then dx and stuff। So in equal to integration from 0 to pi sin nx upon sin x dx, because ये पूरा तो 1 हो रहा है। Nice। Yeah, hey, doesn't this look familiar though? क्योंकि ये सेम चीज लाइक समेशंस में याद है ना, साइन के समेशंस में, राइट? या हाँ, तो थिंक अबाउट इट, देखा उसे फिल हो रहा है, ओके वॉट एवर, नहीं यार ये कोई तो देखा वैसा है, आई जस्ट नो दिस, जस्ट नीड टू फिगर आउट कि मैंने कहाँ देखा, वाई ओनली, ओके मे बी अगर मैं इसमें एक्सपोनेंशियल्स यूज करके लिखूँ, मतलब e पावर i x वगैरह वो सब, देन मैं इसको एज अ जीपी लिख सकता हूँ, राइट? बट इज अ जीपी गुड इनफ? हाँ ये सो ठीक है ना यार, और कोई तरीका भी है क्या अपने पास में? मुझे तो नहीं लग रहा, पर अपन ये कर सकते हैं कि एन ऑड है कि इवन है, उसके बेसिस पे जो पहले तो ये बताओ कि पाई माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स सेम रहेगा, बट अगर यहाँ पे एन इवन रहा देन 2 पाई माइनस एक्स टाइप का कुछ हो जाएगा, सॉरी 2 पाई माइनस 2x टाइप का कुछ हो जाएगा, एंड yeah, that would be negative of this, and that means कि कोई भी इवन नंबर के लिए तो 0 हो जाएगा। oh yeah, nice। so I2 is 0, all right? I3 would just be integration of sin 3x upon sin x। you know what, नहीं इसमें ऐसे gp लिखना बेटर रहेगा, I think
हाँ ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड वगैरह हो रहा है, बट कम ऑन इंटीग्रेशन है, सो वी कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग, क्योंकि वो राइट 0 टू पाई। बट आई एम थिंकिंग इज कि अपने पास में ये चीज है ना कि ठीक है एक्सपोनेंशियल्स पे लिखते डायरेक्टली, सो ई पावर, तो अपॉन आई कैंसिल होने वाला है, उसकी चिंता मत करो। या सो ई पावर आई times nx minus e power negative I nx upon e power ix minus e power negative ix and stuff. So nice. Right, so it's like e power, अगर मैं आई एक्स से कॉमन लूँ और ये कॉमन ले लूँ, so just I of n minus 1x, और जो बची हुई चीज़ रहेगी that is 1 minus e power okay whatever negative 2i and x, और यहाँ पे e power negative 2ix, right? तो look at this, e power negative 2ix is our ratio, और यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, so basically मैं इसको लिख सकता हूँ e power I n minus 1x into 1 plus e power negative 2ix फिर plus e power, yeah you get it right, सेम चीज जो रेशियो है उसको अलग अलग पावर्स में और फिर n तक जाने वाला है, राइट? सो इट्स गॉट टू बी e power negative 2ix e power n minus 1, कूल। और ये चीज अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड एक्चुअली, या ओके। अब मैं क्या करूँ इसका, सो x goes from 0 to pi and stuff, okay this is bad, आई मीन ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे समेशन लिखूंगा तो बेटर रहेगा ना, समेशन फ्रॉम r इक्वल टू व्हाट, 0 to n minus 1 I think of e power I n minus x and then e power negative 2i r x like that. So ये समेशन हो जाएगा समेशन फ्रॉम 0 to n minus 1, यहाँ पे मैं e power I n कॉमन ले लेता हूँ and this will just be e power negative I, क्या क्या आ रहा है इसमें, x तो आ ही रहा है and then it's 2r plus 1 I think, right? तो ये चीज काइंड ऑफ कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x and that's why अपने को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि राइट, और फिर अपने को सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, so it's not that hard I think. Just e power I n summation from 0 to what n minus 1 of integration of, तो वो जो इंटीग्रेशन है उसका क्या हो जाएगा, इट्स जस्ट e power negative I x into 2r plus 1 डिवाइड बाय जो भी कांस्टेंट थे negative I 2r plus 1 and it goes from 0 to pi. ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको पहले ही ऐसे कर दूं कि ये 0 to pi जाना चाहिए और फिर वो जो इवैल्यूएशन होगा उसका मैं समेशन करने वाला हूँ। तो 0 to pi, हाँ, when x becomes 0 it just becomes 1, so okay, and when x becomes pi it's e power, अच्छा ये 2r चला जाएगा बिकॉज वो e1 हो गया and then it's just negative 1 basically. oh तो वो दोनों में पॉजिटिव आएगा, oh yes, this is sweet. मुझे लगा नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतने यूजफुल हो सकते हैं. So e power I n and then this is what summation from 0 to n minus 1 of, right? तो जब मैं 0 put करूँगा it just becomes 1 and when you put pi this will become e power negative I pi basically because बाकी सब तो गया and e power negative I pi is just negative 1, right? So और वो negative 1 इसके साथ में cancel हो जाएगा, that just leaves us with, oh ये negative I होना चाहिए, cool. तो राइट अपॉन आई मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या चलेगा 2r plus 1, बट यहाँ पे 1 plus 1 so 2 basically like this. Nice, so it's actually very doable. Yeah and हाँ मैंने कोई गलती तो नहीं की इसमें, I don't think so, right? It does look good. ठीक है फिर ये सही है. Then e power I n upon I, yeah right, वो चीज इट्स लाइक समेशन फ्रॉम 0 टू, ठीक है ये जो पूरा है वो रियल पार्ट है जो भी है एंड देन दिस थिंग, द थिंग इज लाइक कोसाइन ऑफ, यार कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, अपन ने एन एक्स चाहिए था यार यहाँ पे, ओह
अपन ने ये आई एन कैसे बाहर निकाल लिया थे, बिकॉज वो n माइनस वन एक्स था, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शुड बी एन एक्स माइनस एक्स इन दैट केस, तो यहाँ पे भी एन एक्स आएगा। देन इट्स बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड बट स्टिल कर सकते हैं हम इसको इसी मेथड से। सो इट्स ये चीज गलत है बट ये चीज ऊपर वाली सही है। सो वंस अगेन राइटिंग दिस एज समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 e पावर, लेट्स सी सब कुछ x के इसमें, सो e पावर x इनटू i तो आएगा ही ऑफ कोर्स, एंड देन n माइनस 1 माइनस 2r आई थिंक, राइट कूल। और फिर अपने को बस इसको इंटीग्रेट करना है और 0 टू पाई लिमिट पुट करनी है, सेम काइंड ऑफ थिंग। So it's going to be summation from r equal to 0 to n minus 1 upon n minus 2r minus 1, right? I भी आएगा यहाँ पे and e power I x और वो सारी चीज basically. So अगर 0 to pi जा रहे, oh yeah, it will depend on n in this case, of course. तो ये 2r वगैरह तो कैंसिल हो जाएगा, we don't care about this that much. So mostly it's just जब मैं pi पुट करूँगा तो it's just e power I pi into n minus 1 माइनस जब मैं ओके 0 पुट करूँगा जस्ट 1, राइट, श्योर दिस मेक्स सेंस। ओके सो ये चीज तो गड़बड़ है। हाँ कुछ नहीं, एक मिनट राइट, लेट्स कंटिन्यू। क्या कर रहा था मैं? हाँ, सोल्यूशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ऑफ ये सारी गंदी सी चीज। तो अब तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अपने को सिर्फ इसको देखना है कि क्या होता है इसका। सो e पावर, राइट, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, isn't that right? But n minus 1 minus 2r, that's actually more, it's much better actually. ये देखा हुआ सकता है -1 you say. I know it's just cosine of that -1 and then plus sine of that. Right. Pi times n cosine of that kind of thing. अगर ये 1 देता है then only it makes sense. अगर ये कुछ और देता है, suppose ये 0 देगा, then it's just -1 plus something times iota, और वो upon iota of summation कर, बहुत अजीब हो जाएगा ये, राइट, अजीब तो हो जाएगा। What kind of thing even is this? Look, ये चीज kind of constant को नहीं बाहर निकाल सकते शायद, because yeah, -1 and then it's a summation from r equal to 0 to n minus 1 of मैं r भी बाहर निकाल दूँ 1 upon n minus 2r minus 1. So the thing is कि ये पूरा तो सिर्फ एक रियल नंबर दे रहा है अपने को, राइट, और ये जो चीज रहेगी that actually goes right. So we can definitely write as what iota times, because वो negative बाहर आएगा, right? Yes. So then it's just e power I pi n plus 1, isn't that right? Exactly. So I, and then it's 1 plus cosine of pi n plus I sine, right? You get the idea. So it's going to be e power, in fact नहीं, पहले मुझे लिखना पड़ेगा इसको proper place. So 2 cosine squared of pi n upon 2 plus 2 sine pi n upon 2 cosine of pi n upon 2 iota, something like that. और फिर यहाँ पे आ जाएगा iota into 2 cosine of pi n upon 2, right? And then e power I pi n upon 2. Isn't that correct? Cool. And it's the summation from 0 to, right? तो क्या ये कभी 0 हो सकता है? Maybe, because it's basically what, n minus 1 minus 2r, or yeah, it's going from this to that. Okay. 2r, start off with 2r, so it's like 1 upon n minus 1 से start करूँगा, और yeah, increment क्या है इसमें 2 का हो रहा है, so 1 upon n minus 3, और फिर चलते जाओ, till eventually get, I don't know, अगर ये, oh no,
अगर बाई चांस n जो है वो ऑड रहा, इन दैट केस ये तो कुछ ही कुछ दे रहा है अपने को, बिकॉज इट्स लाइक 0, 1/0. दैट डजंट मेक सेंस. या दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो ये अपनी पूरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पे अपने को 1/0 मिल जाएगा. और ये सेम चीज ही इस्टेब्लिश कर रहा है कि ठीक है, अपन ऑड नंबर्स के लिए कुछ नहीं कर सकते, इवन नंबर्स के लिए तो वो 0 ही हो जाएगा अपने आप. दिस इज एंड फन. दिस इज नो फन. फिर ये पूरी स्ट्रेटजी अपनी फेल हो गई. आई डोंट बिलीव दिस. अपन इतना पूरा किया, क्लोज फॉर्म में भी लाया और ये काम नहीं कर रहा है. ठीक है. सो अगर एन ऑड है देन यू जस्ट नीड टू नो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस मैं सेम चीज लिख रहा हूँ, 0 to pi sin of nx upon sin x dx, right? That's what this thing is. अगर n odd है पर even है तो वो 0 हो जाएगा. अगर odd है in that case it's just integration of 0 to pi. So you can write this as actually pi से pi by 2 पे जा सकते हैं अपन, yeah. And then sin of, तो ये तो सेम हो जाएगा sin x and then it's sin of nx plus sin of pi n minus nx, right? So pi times n is an odd number. That just means it's like same thing as sine of pi minus that. So just 0 to pi upon 2 sine of nx upon sine x. It's the same thing, just it's 0 to pi upon 2 now. Oh, very nice. Up kya? Yeah, this didn't actually help, you know. Wait a second. Did you just do that? Wait, what? How can that be? Oh, sorry, it should be 2 over there. Right, that makes sense. Okay, तो अपन इसको इस सबसे कट डाउन कर सकते. That's not a problem. मतलब ठीक है, बट इससे अपने कुछ मिल नहीं रहा है यार. अगर n odd है then अब क्या, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? Wait, if n is odd then जो अपन ने नहीं, अगर n नॉट था देन n माइनस 1 वुड बी इवन, और फिर हाँ सेम प्रॉब्लम में अपन वापस फंस जाएंगे. ओके, तो ये ऑड नंबर्स की थोड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेशन हो रहा है. हाउ डू वी मेक दिस हैपन? ओके, तो मे बी जो इजी टाइप की चीजें हैं वो अपन पहले कर सकते हैं इसमें. यानी i2 तो ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है. i3, ओके i2 तो 0 ही है. i3 ढूंढना भी इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ 3x एंड इट्स एक्चुअली वेरी डूएबल, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, ये जो चीज रहेगी 1 to 20 of ik, that is something that's problematic, right? So पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं i3 ढूंढने से. So 2 integration 0 to pi upon 2 i3. अगर मुझे ढूंढना है, just have sin 3x, that's like 3s minus 4s cube I think, because yeah, for example अगर मैं sin equal to pi upon 2 put करूँ then it's just 3. Yes, x equal to pi upon 2, that is 3 minus 4, which is -1. Very correct. So 3s minus 4s cubed upon s dx, and it's just 2 integration equal to pi upon 2 of what? 3 minus 4s squared dx. Isn't that correct? Right, it's actually doable, I think. So 2 integration 0 to pi upon 2. This will be 3 minus 2 minus, sorry, actually no, wait. 1 minus, right? So 1 plus in this case, or 2 cosine of 2x dx, like that. So with 2 integration, okay, तो 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2 into pi upon 2 आ जाएगा, और फिर प्लस 2 cosine 2x dx, इसका इंटीग्रेशन. This is from sine of 2x and goes from 0 to pi upon 2. Well, that is 0, so don't have to worry about that, huh? So it's just pi. Oh yeah, it's just pi. तो i3 is pi, but that's only for i3. उसके अलावा कुछ करना ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन करेगा. So cool. And what's i1? i1 would be also pi, because ये चीज कैंसिल हो जाएगी and then just pi, right? So i1 is equal to i3. So 132 का b काम कर रहा है. i2 equal to i3, that is not correct.
1 to 20 इज समेशन, ठीक है, मे भी अपन ये कर सकते हैं। इतना बहुत एलिगेंट नहीं था ये, क्योंकि इसमें कुछ डीप मीनिंग नहीं था, इसे तो मैं कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इट्स जस्ट टू इंटीग्रेशन 0 to pi अपॉन, अगर अपने को सम करना है फ्रॉम k equal to 1 to basically n equal to 1 to 20, right? Sine of x plus sine of 2x till 20x. So number of terms is 20. So sine of or difference is x upon 2. So 20 times x upon 2 is 10x sine 10x. Sine of a plus l यानी कि x plus 20x, that would be 21x l upon 2. So 21x upon 2 upon sine of x like that dx. Yeah, not useful actually. Look, 21 upon 2x, अगर ऐसे pi upon 2 put करता हूँ, then no, this is not going to be useful. But you can also write this as 0 to pi directly, and maybe that would be useful. तो अगर मैं इसमें pi put करता हूँ, then just pi minus x, or so you are saying it's supposed to be 10 pi. Wait, what? No, that can't be, because तुम बोल रहे हो कि सारे के सारे just pi upon, नहीं सारे नहीं, alternate pi upon 2 रहे होगे. Wait, you are saying that for any odd number ये pi upon 2 होता है? How can that be? No, wait. For any odd number. But how does it make sense? ये सही नहीं हो सकता. I get it कि I1 equal to I3, right? But is I5 also equal to I3 and I7? ये ऐसा लग रहा है. नहीं? You're saying that for any odd number, this integration is just pi upon 2. How? One think यार. नहीं यार, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ऐसा होगा. क्यों होगा भला? No. It's just this thing. अपने को ये ढूंढना पड़ेगा. So 21 upon 2 and versus pi. Yeah. So you definitely write this thing as 0 to pi, and then sine of what? 10 pi minus minus 10x, and that would be negative sine of 10x upon sine x, और यहाँ पे आ जाएगा sine of, let's see, 21 pi minus 21 pi upon 2 minus 21. यार ये तो कोसाइन वगैरह कन्वर्जन हो रहा है इसका. Not very fun, you know. Not fun at all. ये सही नहीं है. A plus L, that has to be, so it's just 1 plus 20. So 21 upon 2. That's correct. नहीं यार, तुम बोलना चाहते हो कि हर ऑड नंबर के लिए पाई अपॉन 2 है, which sorry, ये पाई है, not पाई अपॉन 2. Yeah, how is that correct? How can that even be? हर ऑड, अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने वाला और कोई तरीका नहीं है इसको एक्चुअली प्रूव करने का. इंडक्शन मे बी, बट ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. इंडक्शन से करते हैं. अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि लेट्स से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ साइन एन एक्स अपॉन sin x dx is equal to pi upon 2, right? Then next अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा 0 to pi sin of n plus 2x, because अगला ऑड नंबर क्या रहेगा, n plus 2 upon sin x dx, that would also be pi upon 2. तो ये प्रूव करना है. Let's do it. देखते हैं. यार तो बहुत लंबा हो रहा है. ठीक है ना, कुछ नया देखने को मिल रहा है. That's nice. So sine of nx, then cosine of 2x upon sin x, of course, then plus cosine of nx sine of 2x upon sin x, right? अपने को ये चीज इंटीग्रेट करनी पड़ेगी बेसिकली, और 0 to pi बेसिकली. या तो इसमें अगर मैं 2 pi minus 2x पुट करूंगा, then that's not a problem. It just gives cosine of 2x once again. तो yeah, this is not that problematic. और यहाँ पे क्या जगह
but it's an odd number, तो फिर it works out. Yes. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 pi minus x आएगा, that's negative. Okay. और it's like 2n pi. No, not 2n pi. It's just n pi. It's n pi minus pi x. So n pi, that actually does give us a negative, right? Yeah. Huh. And then नीचे pi अपन कर रहा है. Okay, that's not a problem. ऊपर एक नेगेटिव आया और एक और नेगेटिव आया, just पॉजिटिव बेसिकली. तो ये तो चेंज ही नहीं हुआ. ओके, बट ये कैसे हो सकता है? अगर ये चेंज नहीं हुआ, देन हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस कि ऐसा होता है? Just have to prove that this is actually also equal to pi upon 2. How? How am I supposed to prove this? Think. Oh yeah, अपन इसको इस प्लेस में 0 to pi, बट नहीं, यहाँ पे कोसाइन 2x वगैरह आ जाएगा. सॉरी, कोसाइन ऑफ x आ जाएगा. दैट्स नॉट नाइस. इनमें से कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है. दिस इज इवन वर्स. कोई तो तरीका होगा. Oh hey, what if I just, yeah, right. अगर मैं इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करूँ एंड देन स्प्लिट इट इवन मोर, राइट? जस्ट इसको स्प्लिट करते जाओ, देन नहीं, अपने को सेम चीज मिल जाएगी. अपने को वापस n+2x मिलेगा. दैट्स नॉट व्हाट आई वांट. नॉट गुड. तो कुछ और. लेकिन if it's that n is equal to, no, that's not going to work. +2 नहीं चाहिए अपने को की तरह से, सिर्फ nx चाहिए. ये चीज इतना अगर होता वो फिर अपन कर लेते, राइट? वेट, व्हाट? वेट, ओह, ओके, नाइस. दैट्स इट. 0 to pi. मैं सिर्फ इतने पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए. So it's going to be what? Sin nx upon sin x. मैं एक्स्ट्रा 1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा. Then it's just negative of sin nx upon sin x, and then it's going to be 1 minus cosine of 2x, which is just 2 sin squared of x. Done, यार. ये तो बहुत ही अलग था. Okay, so yeah, that's seriously nice, huh? So इतना जो पार्ट रहेगा, just integration 0 to pi sin nx upon sin x, and then okay, let's see, minus integration 2 times integration. Actually नहीं, इसको अपन और split कर सकते, right? So 0 to pi, this will be cosine of the difference, so cosine of n minus 1x minus cosine of sum, so cosine of n plus 1x. Look, ये दोनों even numbers है, right? oh yeah. ये दोनों even numbers है. That means कि ये चीज और ये चीज, ये अपने को सेम इंटीग्रल देगी क्या? नो, नॉट नेसेसरीली. ये तो सेम इंटीग्रल नहीं देगी. बट हे, इट्स नाइस. ओके, और ये जो दूसरा इंटीग्रल था, सिमिलरली अपन इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, राइट? सो देखो, कोसाइन ऑफ nx मिल गया. दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. We can split this actually, so it's just integration of 0 to pi, and then it's just 2 sin x cosine nx. Wait, what? अपने को पहले भी तो यही मिला था ना? No, it was slightly different. So नहीं, sin x तो कट गया था, यहाँ पे cosine x कटना चाहिए. So it's cosine x, and yeah, cool. And that we can write differently. We can write as cosine of difference plus sum, so n plus 1x plus cosine of n plus 1x. और क्योंकि ये नेगेटिव में था, that's why ये चीज कैंसिल हो जाएगी. And then it's just integration from 0 to pi. Well, ये चीज तो अपन जानते हैं, it's just pi upon 2. And then जो बची हुई चीज है, just plus 2 integration of 0 to pi of cosine of n plus 1x. Yeah. And n plus 1 is an even number, so cosine of, right.
and we can write this as 0 to pi upon 2, I think. So yeah, we can write this 2 तो रहेगा ही. अब मैं इसको 4 टाइम्स लिख सकता हूँ. So just 4 0 to pi upon 2 of cosine of so once again just pi minus that stuff. So n plus 1x dx. Nice. And because it's even, right, keep on going. अगर मैं pi by 2 minus x में डाल दूँ, then this would be n plus 1 pi, which is no n plus 1 upon 2 pi. हाँ, I mean अपने को समझ रहा है कि यार ये चीज अलग, यानी ये चीज शायद से 0 होने वाली है, because only in that way can you actually do this thing. Hey, क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? साइड साइन क्यों नहीं यूज कर रहा मैं यहाँ पे? Yeah, sorry. So 2 sine of n plus 1x, right, n plus 1 times x upon n plus 1, it goes from 0 to pi, right? And guess what? Okay, that is 0. Done. It's always pi by 2. यार ये तो सही था. इसका odd, ये तो मैं लिख दूंगा कहीं तो भी, right? So this is odd all of the time. Sin x, sin nx upon sin x 0 to pi. For odd numbers it's always pi upon 2. For even numbers it's, yeah, it's 0. अच्छा है. Yeah, so then this thing actually is correct. It's just pi upon 2 plus 0 plus pi upon 2 चलते जाओ तो 10 numbers में pi upon 2 मिलेगा. That's pi upon 2. This is pi upon 2. No, wait, no. अपन ने assume किया यार ये pi upon 2 नहीं, pi रखना था. हाँ, तो फिर क्या, बस ये pi हो जाएगा क्योंकि ये चीज ये है. So yes, so pi, sorry, but yeah, you get the idea कि odd numbers के लिए pi है, even numbers के लिए 0 है. Then this thing is just 10 numbers के लिए pi, so 10 pi. So C is also correct. 150 plus C. ये तो अच्छा था यार. मैं इसको इनफैक्ट ये तो लिख डालूंगा. Let's go to 133. The bisector of internal angles A in DABC meets BC in a point D such that BD equal to 4 CD. Wait, what? DABC क्या है वैसे? I think it's a quadrilateral or something. So DABC. The bisector of internal angle बोलने हैं A. So maybe like this. Okay. Meets BC in point D. Wait, what? This point is D. ठीक है. Then ये point D नहीं है. This is very weird. एक काम करो ना, फिर सिर्फ एक ट्राइंगल तुम ABC. I think ये जो D है ये ट्राइंगल साइन होनी चाहिए थी, बट इन लोगों ने वो स्किप कर दिया. whatever. So एक ट्राइंगल है ABC. इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो यहाँ पे मीट करता है D पे on BC such that BD equal to 4, CD equal to 2 if altitude AE is bigger than square root 10. Then AC may be what? Okay, तो altitude AE. थोड़ा गंदा वाला ट्राइंगल बनाओ, मतलब थोड़ा सा जेनरिक फीलिंग आएगी. मतलब बहुत ही गंदा हो गया, बट ठीक है. ABC. इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर that meets this in E, and then the altitude is E. Or AE is bigger than square root 10, huh? Okay. अच्छा, BD is what? BD is 4, CD is 2. लग नहीं रहा है, but just bear with me, it's 2. AB and AC are integers. Like what? Okay, ये important है. AB and AC are integers. तो ऐसे दो इंटीजर्स इनका रेशियो 2:1 हो. Oh, okay. But first of all, AE square root 10 है, that means कि AB और AC भी square root 10 से बड़े होने चाहिए, otherwise it doesn't make sense, right? तो AC may be दोनों AB और AC, those must be bigger than. In fact, इसको B नहीं रख के इसको B रखता हूँ. This is B, this is C. This would be 4, this would be 2.
then AC जो रहेगा वो छोटी साइड रहेगी, so this side times 2, that's bigger than square root 10, and same time this is also bigger than square root 10. Square root 10 is 3 point something. Okay, ये तो सारे के सारे bigger than square root 10 आ रहे. This doesn't look good. uh hmm. AC maybe this is like x and this is 2x. अपने को पता है ये जो पूरी साइड है ये is just 6 basically, right? तो yeah, that's complete thing is just 6. इसको y बोल दो, then this thing is just 6 minus y. yeah, वापस वही सेम चीज करनी पड़ रही है, but okay, करना तो पड़ेगा ही. then that means कि x square plus y square, no, x square minus y square is equal to h square is also equal to, अपने को ये दिए नहीं है यार, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइप से तो अपन कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे. 2x का स्क्वायर माइनस 6 माइनस y का स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट. एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये दोनों क्वांटिटीज इट्स जस्ट बिगर देन 10. ओके कूल. सो x square is bigger than 10 plus y square, which is also bigger than 10, that's for sure. And otherwise you also have a 4x square bigger than plus 6 minus y square and stuff. But yeah, so bigger than 10 plus 6 minus y square. Okay. Now what do I do? Like minus 2 and something. Right, this is what is just 36 plus 10 is just 46. 46 minus 12y plus y square. Okay, and then what? So x square is bigger than, let's see, 46 minus 46.4, I think. Plus y square. Look, ये तब अच्छा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा है for some reason. Okay. Well, of course, y जो रहेगा वो 6 से छोटा रहेगा, and that's good and all. And it's not helping, is it? It's just not helping. ये पूरी चीज just 6 minus y है. From the figure मैं बोल सकता हूँ कि 6 minus y is actually bigger than y, and that means y is in fact less than 3, right? So y is less than 3, and that means 6 minus y must be bigger than 3. So technically this is actually bigger than 19. So not helpful. The square root of 19 upon 4, that's still just not good. This being x and this being 2x must have some special, और तुम्हें सिर्फ ये base दिया हुआ, तो maybe बोला कि सिर्फ ये height is bigger than square root 10. Then what will AC be? How am I supposed to do that? क्या तुम in terms of x completely ये चीज बता सकते हो कि ये कितना रहेगा? Maybe it's possible. तो अगर मैं y को एलिमिनेट, राइट, लेट्स से दिस थिंग इज इक्वल टू h स्क्वायर, और वो 10 वगैरह इनइक्वालिटी वगैरह छोड़ देते हैं और जस्ट h स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x ढूंढने का ट्राई करते हैं. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू दैट. तो जब y एलिमिनेट करना है, जस्ट y ढूंढ के एलिमिनेट करना. ओके फाइन. 4x स्क्वायर माइनस y, नहीं यार इससे काम नहीं करेंगे. So let's just try it out. So 4x minus y squared plus 12y minus 36, I think, right? Okay. तो मैं subtract कर सकता हूँ. It just leaves us with 0 equal to 3x squared plus 12y minus 36. So y is equal to 3 minus x squared upon 4. Now we can just put that over here. So this thing is just equal to x squared minus 3 minus x squared upon 4 का square. That's what h squared is. So h squared is equal to, we can just say x minus this thing and x plus this thing and something like that. Yeah, so x minus 3 plus no, इसको proper तरह से करते हैं. x square, well look, x कुछ भी हो सकता है in this case, right? Yeah,
मतलब तुम ऐसे हजारों तरह से ढूंढ सकते हो कि हम्म, इसमें हजारों तुम्हारे एक्स पॉसिबल है और हर एक के लिए अलग अलग हाइट रहेगी. सो एक्स माइनस 9 प्लस minus sorry minus what 3 upon 2 x squared and then plus x squared upon 16 something like that. So or you could just say 16 h squared. यार ये सही तो कर रहा ना मैं. लग तो रहा है, लग तो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ. Yeah, nice. Then 16x square is just equal to 16x square minus 9 plus 3 by 2 times. Oh, sorry. No, फिर इसको अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर दैट इज जस्ट 15 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर एंड देन ओ यहाँ पे भी ये एक्स पावर 4 चाहिए था ऑफ कोर्स. व्हाट इज दिस नेगेटिव एक्स पावर 4 अपॉन 16 प्लस 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9. वेरी वियर्डली सेम. एक काम करो x अपॉन 2 को t बोल दो, देन इट्स जस्ट नेगेटिव t पावर 4 plus so x is like 2t, that means it's 10 t square and then minus 9. Okay, that's better actually. In fact नहीं, x square upon yeah, so t यहाँ पे मैं डायरेक्टली t square यूज करूँगा instead. So x square upon 4 को अपन t बोल देंगे. Then this thing is of course is t square. It works out. Cool. And अब अपन नीचे से सॉल्व कर सकते हैं. So negative of t square minus 10t plus 9 which is negative of t minus 5 का square और यहाँ पे मुझे plus 25 चाहिए, so plus 9 minus 25 and then it's going to be just this quantity plus 25 minus 9 which is just 16. So 16 plus 16 minus ये सारी गंदी सी चीज. Yeah, so h squared equal to 16 minus of t minus 5 का square and then this h squared is less than 10. Okay, 16 होना चाहिए था. Then that means t minus 5 ka square that is bigger than 6. So t is bigger than 5 plus square root 6. But guess what t is? T is just x square upon 4, right? So x square is bigger than 4 times of all that stuff. 20 plus 4 square root 6. Now we can figure out what x is. So x is bigger than square root of 20 plus 4 square root 6, right? ये तो बहुत लंबा हो गया बट करना तो पड़ेगा. राइट, तो इनमें से कौन से है दैट x मे बी. hey wait a second, this was 4. no, it's like 2 into 2 square root 6 maybe शायद से अपन कर सकते थे but then it's not gonna work actually. Two square root and then 2. That could be 3 into 4, 12 plus 2. No. कुछ और तरीके से कर सकते हैं इसको. Definitely it's like square root of 2 and then square root of 10 plus 2 square root 6 maybe. Then it's square root 6 plus 1. No, it doesn't work. मैं सोच रहा हूँ कि मे बी ये कोई परफेक्ट स्क्वायर में लिखते आता हो. सो इट्स 2 into 2 square root 6 अपने को यहाँ पे चाहिए रहेगा. Maybe like 2 square root 3 after square root 2 or something like that. 2 square root 2 that gives 8 and this square root 3 that gives 3. No, doesn't work, does it? No, it doesn't. ठीक है, जो भी है. तो इनमें से कौन सा है जो कि इससे बड़ा है? ये कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन? So 20 plus 4 into something bigger than 2, right? So this is like x is bigger than, yeah, 20 plus 4 and then something bigger than 2. Yeah, 2 is the best choice. So 28 से कुछ भी बड़ा, 16 से बड़ा, so x should be bigger than 4. Okay, 5 or 6 possibilities है. I think 6 is definitely going to work because सबसे बड़ा नंबर इसमें ही है. And क्या 5 इससे
बड़ा है कि नहीं है. So that would be the same as saying that 25 is okay, actually 5, just 5 is bigger than 4 square root 6. So 25 bigger than 24. No, not 24 because 5 bigger than 4 square root 6 हो गया ना, which is not correct यार, because 4 square root 6 is much bigger than 5. Then no, it's only C. So 133 का C. Next. ये दो क्वेश्चंस क्या थे, इतने लंबे क्यों थे आखिर? 134. F of x equal to this thing, f is differentiable at x equal to 1, then not that bad. So f dash, wait, first of all continuous होना चाहिए, right? So x equal to 1, that is sets a plus b plus c is equal to 2a plus b, right? So a equal to c first of all. So basically our f of x just becomes ax square plus b plus a. Whatever. Then इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? f dash of x is 2a plus b and 2a. Oh, okay. When right, so sorry, 2ax plus b. But yeah, at x equal to 1 ये तो 2a plus b हो जाएगा, and that means कि b should be 0. That's the way. तो b 0 है, then मैं वापस लिख रहा हूँ f of x is just ax square plus a and 2ax. Yeah, तो a तो कुछ भी हो सकता है in this case. So minimum of f is when, right, minimum of f is a when a is bigger than 0. तो जब a bigger than 0 है, then it's just like, okay, let's do it. So at x equal to 1, it's 2a. Sorry, x equal to 0 पे 0 पे 0 है, and then at 1 it's 2a. actually नहीं, x equal to 0 पे क्या होगा? a होगा ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? पैराबोलिक टाइप का रहेगा, और yeah, at 0 it's the minimum in fact, और यहाँ पे ये इस टाइप की एक लाइन बन जाएगी बेसिकली. Cool. तो minimum of f is a when a is bigger than 0. Yes, that's very correct. F increases when x and a have the same sign. But a has the same sign? Increases what? What are you saying? I don't know तुम क्या बोल रहे हो यार. अगर तुम्हारा सपोज a नेगेटिव होता then this would be like this. ये डाउनवर्ड पैराबोला एक्चुअली a अगर नेगेटिव है then it should be like just the reciprocal, complete reciprocal क्या बोल रहा हूँ मैं, just complete inverse of this thing. तो इस टाइप कुछ भी होता, right? Then it's not monotone increasing or whatever. That's not correct. Okay. Maximum of f is when a is less than 0. What? Oh, okay. Maximum of f is a when a is less than 0. No, it would be, yeah, actually yes, because a is also negative, then it's correct. In fact, it's very correct. So yeah, b is correct. This would be maximum. अगर ये उल्टा ग्राफ होता then this would be the maximum. f decreases when x and a have the same sign. क्या बोल रहे हो यार? मोनोटोन डिक्रीजिंग नहीं है, मोनोटोन इंक्रीजिंग नहीं है, तुम क्या पता नहीं क्या बोल रहे हो. सो a and b are the only thing that's correct. 135. 135 is let 0 to 1 integration of e power x upon 1 plus x dx equal to a. उस टाइप का वापस आ गया. Okay. I1 is this thing, I2 is this thing, x upon x plus 1 squared. Then ये चीज है I1 I2 अलग टाइप से ले सकते हो. तो तुम्हें I2 की डायरेक्टली वैल्यू ढूंढनी है, बिकॉज लुक एट दिस थिंग. इनफैक्ट तुम्हें सभी की वैल्यूज ढूंढनी है. दिस इज जस्ट द वर्स्ट. ओके, तुम इसकी वैल्यू कैसे ढूंढोगे? फ्रॉम 0 to 1, बस 1 माइनस x पुट करना तो इम्पॉसिबल नहीं, वो काम नहीं करेगा. देन सिंपल वे, that's
So log something, no. How do you figure out कि ये actually में क्या है? Come on. 1 put करना है. So 1 upon x put करना शुरू करो. From 1 to infinity in this case. Yeah, that's not useful. Seriously, that's not useful. I1 is a plus. Wait. A कहाँ है इसमें? A. अच्छा, ये चीज तुमने a पुट किया तो okay. So you want to write. अच्छा, तुम्हें I1 I2 को सिर्फ a के फॉर्मेट में लिखना है. Right. So it shouldn't be that hard. So you can just do. Right. Not hard at all. Wait, what? E power x times x square, huh? 1 minus x का स्क्वायर वो काम नहीं करेगा. Then yeah, differentiate integrate. तो x square को we can kind of differentiate maybe and integrating this thing. No, that's not nice. What about x e power x? No, just no. You want to write I1 in terms of a. Negative x when I put code, then that's also just a bad thing to do. Don't do it. Okay, just have to do it like that. So let's do it. X square e power x upon x plus 1, right? What I want to do is कि maybe मैं okay x plus 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ then it's just gonna give us कि यहाँ पे 1 plus x का स्क्वायर वगैरह आ जाएगा. Not something we want, but maybe अगर मैं इसको से इंटीग्रेट कर देता हूँ then maybe it's not that bad actually. So इंटीग्रेटेबल सबसे इजी कौन सा है? e पावर x then x square. So अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ it just becomes e power x and then x square upon x plus 1. और फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ just e power x, इसका डिफरेंशिएशन just 2x into x plus 1 minus x plus 1 का related to 1 है, so just x square like that. That upon x plus 1 का square, isn't that right? And that's just e power x और फिर 2x square minus x square is just x square and then x square plus 2x upon x plus 1 square. Hey, this works actually because guess what? It's just e power x and then you can write this thing as x plus 1 squared minus 1, so just 1 minus of 1 upon x plus 1 squared. Not that bad, but then once again यहाँ पर square आ रहा है, that's not what we want. So this is just the worst. यहाँ पे square आ रहा है यार, square not good. Just e power x minus e power x upon x plus 1 square, right? और ये सब क्या, ये सब नेगेटिव में आने वाला है, right? So first of all, ये evaluate कर लो, it goes from where to where? It goes from 0 to 1, right? When you put 0, this just becomes 0, and when you put 1, it becomes e upon 2. So e upon 2, and then फिर ये negative में आएगा, it's just negative of, when you put 0, just 1, and you put 1, it's e. So negative e plus 1, and then ये negative positive, so it's just positive integration of, right? Because yeah, exactly. वहाँ पे मैंने वही किया था. Just positive integration of e power x upon x plus 1 square and then dx like that. Nice. What I'm thinking is कि अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, right? तो इस केस में we will do e power x and then yeah. So let's say it's negative e power x and then it's negative 1 upon x plus 1 square dx. We can definitely integrate this thing and we can differentiate this thing. So it's negative e upon 2 plus 1 and then this thing. So नेगेटिव ऑफ, लेट्स सी, तो पहले तो अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इस पहले इंटीग्रेट कर देंगे, जस्ट 1 अपॉन x plus 1 एंड देन दैट e पावर x. क्या ये पहले भी हुआ है? नहीं, जस्ट x स्क्वायर हुआ है, नथिंग एल्स. फाइन. ओके, एंड देन माइनस 1 upon x plus 1 of e power x डेरिवेटिव, जस्ट उसका इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x upon x plus 1 dx, and yeah, this thing is just a. Okay, so just for me a, and of course it goes from there to there, so 0 to 1. So it's e upon 2 plus 1 and then minus
let's look at this one. When you put 0, ये हो जाएगा e, so negative e. No, sorry, just negative 1. When you put 1, it's e upon 2, I think, right? So it's a minus e and then plus that, so plus 2, a minus e plus 2. So 135 का a और भी होगा कुछ. सिमिलरली अपन अगला भी कर सकते हैं, सो i2 भी अपन ढूंढ सकते हैं. So for i2 you want this thing, x square upon x plus 1 square and then dx. पहले से भी गंदा है तो. Okay, what about I just put x plus 1 minus 1? Maybe that actually will work. So it's just x plus 1 minus 1 and then, right, it will actually work. So it's going to be 1 minus 1 upon x plus 1 square, and guess what? That's just 1 minus 2 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 1 square dx. Right. Oh, sorry, e power x में भूल गया. E power x. So first of all, e power x का derivative हो जाएगा, just integral हो जाएगा, sorry. And look, x plus 1 का जो derivative, that is this thing, right? So what we can do is separate one of these. So separate 1 upon x plus 1 first of all, and then it will just be a, because e power x upon x plus 1 का integral a. और of course 0 to pi अपन put करने वाले 0 to 1, right? और जो बचा हुआ रहेगा that is plus integration of, in fact, negative integration of e power x 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 का square dx. Guess what? This is just the integral. This thing is just derivative of e power x upon x plus 1. So yeah, I mean, this is just e power x upon x plus 1. And it goes from what, 0 to 1. So 0 to 1 is e minus 1 actually. E minus 1 minus a, and then minus e upon 2. और 0 put करने में क्या आ जाएगा? Minus 1. 2. Then this cancels. It's e minus of e, so this is e upon 2 and then minus a. Yeah. This makes sense, I think. So I think it does make sense. Cool. So I2 is just e upon 2 minus a, so it's going to be c, 135 ka c. And with this, I'm going to stop. So I'll see you in the next video.